Dear students, I am Saras sir, Viraja Tutorial. This is the second year approach, subject English. Name of the topic is My Greatest Olympic Prize. It is a most interesting prose piece written by J.C. Wentz. J.C. Wentz was an American track and field athlete who participated in the summer 1936 Olympic game held in Berlin. What is the Olympic game? The Olympic game is the world's foremost sports competition featuring summer and winter, in which the athletes from all over the world participates in a variety of competitions. It is held in every 4 years. Let us start the prose piece entitled My Greatest Olympic Prize. My Greatest Olympic Prize. It was the summer of 1936. That means the incident was happened in summer 1936. The Olympic Games were being held in Berlin because Adolf Hitler childishly insisted that his performers were members of a master race. Nationalistic feelings were at an all-time high. That means in 1936, the Summer Olympic Games was held in Berlin, the capital city of Germany. At that time, Adolf Hitler, the Nazi ruler, was the leader of Germany. Adolf Hitler was the ruler of Germany. He childishly insisted that his performers belongs to a master race and they will win all the medals. That's why the nationalistic feelings were running high. ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯାହା ସମର ସମୟରେ କିମ୍ବା ୱିଣ୍ଟର ସେସନରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସାରା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନେ ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ। ଏହା କେତେ ବର୍ଷରେ ହୁଏ? It is held in every 4 years. It is held in every 4 years. Its feature is it will be held in summer or in winter. The athletes from all over the world participates in a variety of competitions. Now the incident that I am telling to you, it happened in 1936. At that time, Adolf Hitler was the ruler of Germany. He childishly insisted, माने से उठे जिदी धरी की कथा कहला है कौन जे जर्मन एथलेट्स जर्मन जाति श्रेष्ठ जाति तांको एथलेट्स माने सबु मेडल जीति जिबे तेणु करी जर्मन देशर लोकमानक मनरे जर्मन देशर लोकमानक मनरे जातीय चेतना सबुठु उच्चरे रहितिला। प्रश्न आसीबो व्हाई द नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वे रनिंग हाई ड्यूरिंग 1936 समर ओलंपिक गेम Adolf Hitler was the ruler of Germany. He childishly insisted that his performance belongs to a master race and they will win all the medals. So nationalistic feelings were running high all time. Okay, next. I was not too worried about all this. I had trained, suited and disciplined myself for 6 years with the games in mind. J.C. Wentz is telling that when I heard Hitler is insisting that his performance belongs to a master race and they will win all the medals, I was not too worried because I had trained, suited, disciplined
for long 6 years with the game in mind. ମୁଁ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ଯେ ହିଟଲର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେଶର ଆଥଲେଟ୍ସ ମାନେ ସବୁ ମେଡାଲ ଜିତିଯିବେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଲି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ କାଳ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି, ତାଲିମ ନେଇଛି, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି ଏବଂ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୁହାଇ ଦେଇଛି। ଯେପରି ମୋର ଆଶା ଅଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଡାଲ ଜିତିବି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ'ଣ କରିବି? ମେଡାଲ ଜିତିବି। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଲା? ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହିଟଲରଙ୍କ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଦୌ ଚିନ୍ତିତ ହେଲି ନାହିଁ। ହେଲା, I was going over on the boat. While I was going over on the boat, all I could think about taking home 1 or 2 of those gold medals. I had my eye especially on the long jump. Hello, Jesse Owens was coming from USA. He belongs to an athlete of USA. While he was coming from USA to participate in the Summer Olympic 1936 गेम, से बाटरे आसुदला बेले बोट रे चिंता करथुले कोन ना मु निश्चिंत भाबे गोटे दीटा मेडल जीतिबी एवं मोर स्वतंत्र भाबे मोर आखि अछि का ऊपर ना लॉन्ग जंप ऊपर। मोर का कथा को नै कि चिंतित हबार किछि आवश्यकता नाही, नॉट टू बी वरीड एट ऑल। कारण बिकॉज़ टुडे कहउछोंती हमें I had trained, suited and disciplined for long 6 years with the game in the mind. तो देहरु झाड़ बोई देछि, कठिन परिश्रम करिछि, ट्रेनिंग नेछि आ कोन एवं मु निश्चित गोटे दीटा मेडल जितेबी। मोर नजर स्वतंत्र रहिछि। A year before, as a university student, I had set the world record of 26 feet 8 and quarter inches. Everyone kind of expect me to win that Olympic event hands down. Before the commencement of summer 1936 Olympic Games held at Berlin in 1936, I had set a world record of jumping 26 feet 8 and quarter inches. That was a remarkable achievement of mine which I had created while I was a student of a university. गोटे वर्षक पूर्वर मु जेतेबेले एक विश्वविद्यालय छात्र थिली सेतेबेले मु 26 फुट 8 गोटे इंचर 4 भागरु भागे क्वार्टर एति कि डेंगी गोटे वर्ल्ड रिकॉर्ड करछि। तो जे कोनसी लोक आखि बुझी कि मो परे बाजी मारी कह दे पारिबो जे जदी के लंग जंप रे जीते से एथलीट जन कहउचंती जेसी वेन्स। Everyone was expect to win. Luzlong will Jesse Owens will win the long jump event. हला तो जे कोन लोक कह दे परिबो जे मु करिबी जीतेबी कारण मु तो रिकॉर्ड करछि ना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हिसाब रे। सुन कोन हला ना I was in for a surprise. मु चकित हो गली, मु आश्चर्यचकित हेली केतेबेले when the time came for the long jump trials. long jump आरंभ हबो तार अभ्यास मैचटा अभ्यास बोले प्रैक्टिस करा आजिबो तमे सिना तम देश रिकॉर्ड करी सब आछो एठी गोटे अभ्यास मैच करा जाय। तो करी एठी ते अभ्यास मैचटा आरंभ हेछि मु चकित हेली कोन पाई फॉर व्हाट। Now I was startled to see a tall boy hitting the pit at almost 26 feet on his practice leaves. He turned out to be a German named Luzlong. अरे मु देखिली चकित हो गली, छानिया हो गली, startled. Hala, I became greatly surprised to see a tall man hitting the pit almost 26 feet in his trial jump. अभ्यास मैच रे जर्मन देशर जने एथलीट जहाँ ना हूँ लुजलंग सी कौन कली 26 फुट आसिले एकाधरे डेई देले
आ मु तो देइछि 6 फुट 8 एंड क्वार्टर इंच आ केते की ये मोर बड़ प्रतिद्वंदी आसी गले बोली मु भाबी नेली आई कंसीडर हिम ए ग्रेट अपोनेंट ऑफ माइन हला तेणु करी मो भीतर गोटे छानिया आसी गला बोले मु सरप्राइज हो गली मु स्टार्टल्ड हो गली अरे ये कौन ये एते बड़ जर्मन एथलीट ये आसिकी 26 फुट डेलानी ये तो सब मो रिकॉर्ड भांगी दो आई वाज टोल्ड दैट हिटलर हैड केप्ट हिम अंडर रैप्स एविडेंटली होपिंग ही वुड विन द जंप मते कुआ गला आई वाज टोल्ड देयर सेटार मते कुआ गला जे ये होचंती हिटलर कर सीक्रेट हिटलर हैड केप्ट हिम अंडर रैप्स मान केप्ट हिम हिडन अंडर रैप्स केप्ट हिम हिडन हिटलर को नुचे की रखिथिले प्रकाशित कर नथिले यार प्रकृति ये तो प्रमाण करके देखे साइलेंट 6 फुट डेंगी he has proved his worth and efficiency by jumping 26 feet in his trial अरे बा ये तो मो पाई गोटे ग्रेट अपोनेंट आसी गला जा कहउतले हिटलर जे जर्मन जाति श्रेष्ठ जाति सब मेडल जीति जिवे ताको एथलीट्स माने इट विल प्रूव द theory of Aryan superiority theory led by Adolf Hitler. After all, I am a Negro. अधिकंतु मु होची गोटे कोन निग्रो कला लोक रेशियल कॉम्प्लेक्स सेते बेले थिला वर्ण को नहीं वर्ण विद्वेष नीति जोटा कहती रेशियल कॉम्प्लेक्शन मु कला लोक हमको अंडरएस्टिमेट करा जाए a little hot under the collar about Hitler's ways हिटलर जा चाहूचंती या तांको प्रति गोटे एटा गोटे कोन चैलेंज आमी सब चैलेंज सृष्टि करला भलिया कारण से गोरा लोक तांको आइडिया को आमे हट करछु बुझिबन तेणु करी आई डिटरमाइंडेड टू गो आउट देयर एंड रियली शो अ डीप फादर and his master race who was superior and who was not मु सेउटो स्थिरीकृत कली मते टिके राग लागि होला प्रकृत रे हिटलर को कथा जदी सत होई जाय जे कोन जर्मन्स who are Aryans they are superior to all other races and his performers will win all the medals ताल मु एते वाटर आसी दिली काई मते टिके शरम लागिला जोटा कोन I feel nervousness. तापर तथापि I took a concrete decision. Finally, I took a concrete decision. Whatever the matter is, मते संग्राम करिया को पड़िबो एवं जीति के देखे देबा को पड़िबो कहा कथाटा सत जर्मन जाति श्रेष्ठ ना अन्य जाति मानकर किछिटा अछि बुझि पाछ निग्रो आमे कला लोक हमर भी किछि टैलेंट अछि ना नहीं हम किसी से कम नहीं है एबड़ा गोटे थॉट ताको चिंता धारा भीतर को पसी आसीला जे हमें देखे दो वी विल प्रूव आवर वर्थ एंड एक्सेलेंस हमें जीतिब वी विल बी द विनर पर्टिकुलर माय सेल्फ आई विल ट्राई माय बेस्ट मो पार पर्यंत मु चेष्टा करी जो डी फॉर जो लिखा है सेटा इट इज ए टाइटल ऑफ हिटलर को अन्य नाम रे डका जाए जेमिति हमर ध्वनि को कैप्टन कूल उपा जाउछि बुझि परछु से बेला कोन ताकर एटा हला गोटे उपाधि हिटलर कर तेन करी ताको कथा सत ना मो कथा मु प्रमाणित कर देई पारिबी तेन करी आई टुक ए कंक्रीट डिसीजन व्हाटएवर इट माइट बी द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टेंसेस आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू विन a medal in long jump. Thanks to all my dear students. This is the first prose title My Greatest Olympic Prize. My Greatest Olympic Prize writer J.C. Wells. जदि पाठटी तमर पसंद हेइ दिबो या को लाइक करिवो सब्सक्राइब करिवो शेयर करिवो एवं कमेंट करी जणैबो आउ कोठी कोन त्रुटि रहिला आउ केमिति भलो भाबे करा जाय परिबो ता पई भी सजेशन दबो थैंक यू ऑल।